जी। Hello everyone. Today we are with Kishor Ostwal ji. He is Managing Director for CNI Research Limited. How are you, sir? I'm fine. Now the name of the company has changed from CNI Research to CNI Info Exchange Private Limited. Acha. Okay, that's great. So, but you Yeah. are the same person, and we always love to talk to you. दिवाली के टाइम पे आप हमेशा हमको अच्छी टिप्स देते हैं और बताते हैं कौन सी इंडस्ट्रीज को हमें देखना चाहिए। तो सर शुरू कर देते हैं जरा क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो वही है, कौन सी इंडस्ट्री हमें देखनी चाहिए फॉर कमिंग 1 ईयर। इंडस्ट्री के ना, वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद द इंडस्ट्री करना है या पहले मार्केट का व्यू आपको लेना है? सर सब स्टार्ट करना है। इंडस्ट्री से ही कर रहे हैं हम लोग। सब करना है, इंडस्ट्री से स्टार्ट तो करना है तो इंडस्ट्री से कीजिए, मार्केट से करना है तो मार्केट से ठीक है। शुरू कीजिए। आई थिंक मार्केट से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो ठीक है। इंडस्ट्री पे हम ओके। थोड़ा पीछे आते हैं। थोड़ा ठीक पीछे है। आते हैं। मार्केट देखिए 1 साल से कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट सितंबर 2024 में मार्केट ने 26,300 का टॉप किया था। जी। उसके बाद वो नीचे जाके 23,700 का बॉटम बनाया था। और 23,700 के बाद 24,500 और 25,500 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। जी। कई सारे निगेटिव फैक्टर्स है जिसको मार्केट ने डाइजेस्ट किया है। सबसे पहले कि ट्रम्प ने इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, 50% टैरिफ लगा दिया है। पर मार्केट ने उसको डाइजेस्ट किया है। काफी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को भी मार्केट ने डाइजेस्ट किया है। मॉनसून के कारण अर्निंग खराब आएगा तो उसको भी मार्केट ने डाइजेस्ट किया है। Q1 हमारा थोड़ा वीक था, उसको भी मार्केट ने डाइजेस्ट किया है। तो मेरे ख्याल से मार्केट, और सबसे बड़ा फैक्टर है कि आज के तारीख में एफआई है 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट एफ एंडो में शॉर्ट है, which is very difficult to cut even if they desire। 5-6 हजार पॉइंट सेंसेक्स की रैली हुए मगर ये शॉर्ट कट नहीं सकते। और ये शॉर्ट लास्ट 6 महीने से चलता आ रहा है। वो लोग भी मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा काटते हैं थोड़ा वापस ठोकते हैं, थोड़ा काटते हैं थोड़ा। वो लोग है ना, मतलब बेसिक 1,60,70,000 की क्वांटिटी को बेसिक शॉर्ट रखा है। और ऊपर का 30-40 हजार शेयर में थोड़ा, जैसे कल 197 तक पहुंचे थे, तो वापस कल 13,000 कॉन्ट्रैक्ट काट के 1,87,000 तक आया है। यानी 1 लाख एक कॉन्ट्रैक्ट 75 निफ्टी का होता है, तो आप लगभग समझिए जितना ओपन इंटरेस्ट है 1,50,000 करोड़ का, उतना ही तो ये शॉर्ट है। 1,40,000 करोड़ शॉर्ट, और राइट। 1,40 लाख करोड़ शॉर्ट। ये बबल है, ये इतना आसानी से कटेगा नहीं। तो एक कन्विक्शन क्रिएट करता है कि हमारे लिए ये शॉर्ट इंश्योरेंस बन गया, मार्केट इंश्योरेंस बन गया। और जो लोग तेजी कर रहे हैं कि आज न कल बाजार तेज होगा, तो ये लोगों को मालूम है कि ये बाजार फटने वाला है, उसके एंटीसिपेशन में वो लोग पोजीशंस बना रहे हैं। So I will compare this situation with September 2021, where Nifty consolidated at 15,700। There 2,98,000 करोड़ की सेलिंग आई थी एफआई की। उसके बावजूद वो 15,700 15,400 निफ्टी तोड़ नहीं पाया था। मार्केट बोलता था 10,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। 15,400 में कोई कंटिन्यूसली पोजीशन लिख रहा था, तो 15,400 17,100 की रेंज में काफी समय तक बाजार घूमता रहा है। तो ये पीरियड करीबन 9 महीने का चला था। और उसके बाद जब उसने रेंज तोड़ी, तो ये सीधा 26,000 की तरफ चला गया। मतलब आप सोचिए, मतलब मार्केट कितना बड़ा रिटर्न देता है अगर आपको सही जगह पे, सही स्टॉक पे, तो सही टाइमिंग पे पैसा लगाने को अगर मिला मौका, तो इस प्रकार से रिटर्न देता है। अभी भी ये सिचुएशन एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली मैंने, आप बोल सकते हो कि मिरर इमेज है। मैं कंटिन्यूअसली डाउ पे बुलिश था, मैं कंटिन्यूअसली नैस्डैक पे बुलिश था, मैं कंटिन्यूअसली निकाई पे बुलिश था। और हर आदमी जहां से भी मैं काउंटर करता था वो बोलता निकाई वो कैरी ट्रेड हो गया, 34,000 हो जाए, अभी ये 20,000 हो जाएगा निकाई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 34,000 वाला निकाई ऑल टाइम हाई 48,000 हो गया। मैंने निकाई ऑलमोस्ट 25% आउट परफॉर्म कर गए। सेम थिंग डाउ में था। 37 पे सब बोलते थे डाउ बहुत खराब होता है, 30,000 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगेन डाउ आउट परफॉर्म 43,000 का ऑल टाइम हाई क्रॉस करके अब 48,000 को भी टच कर चुका है। मैंने अगर ऑल टाइम हाई के भी अगर 10% ऊपर चला गया है, सेम थिंग इज विद नेस्डैक, सेम थिंग इज विद S&P, सेम थिंग इज विद डैक्स, देन व्हाई नॉट निफ्टी?
Nifty is showing same pattern, and very soon, I don't know. My soon definition is 3 months, 5 months, 6 months. I don't know, but certainly I will show you that Nifty also goes 10% above the last 26,300 last trading of September 2024. So in short, Nifty is likely to touch 30,000, maybe before March, maybe before December, I don't know, because I'm not a part of market operators. But certainly I read the data and my data shows that Nifty will test 30,000 very soon. Now, let's go do a reverse engineering. We just issued a report day before, and our report was taken by some NDTV also. Now that report we have calculated 1 year forward price earning ratio, and based on the EPS of each component of Nifty, and our spreadsheet suggests that the worst growth scenario we are taking, that 9% growth, worst earning growth 9%. Normally we grow at 13%, 12%, 14% also we have grown. Even media has estimated today morning saying that Nifty will earning will grow 12% plus even in Q2. I am taking a worst case scenario 9% growth for FY 25-26, which is unlikely, which I will discuss in second part because of that GST impact and income tax impact and other reforms. But still, if I take a 9% worst case scenario, my 1 year forward P comes to 16.76, 16.76, which is lowest of this decade, lowest of this decade. I mean, even in 2000, when the COVID happened, our P did not go to 16.76. Even though on face of it, we can see it is 21.3 or something, but 1 year forward, it is 16.76. That means even if it comes back to normal 19 on 22, where average P is 21 or 22, the Nifty target comes to 30,000 plus. So whichever way you calculate, it is a clear pointer that Nifty is going to test 30,000. Now, what can come? Like probably Trump settlement comes in November or maybe October or maybe on Diwali, you will see a spike in Nifty. And then that FIIs, we are ensuring our Nifty's bottom, they will come for cutting, and that cutting will take us at least 5,000 Sensex up, at least. So relevantly, you can take that Nifty will be straight in a new high zone. And then that euphoria, people will come like a mad. Even every time they come at 26,300, I was bearish. And then Morgan Stanley issued a report that 27,800 ho jayega. People started buying like a mad, and they stuck up in the Yes, euphoria. because Even stock people prices, feel we are missing the boat. हमेशा ऐसे फील होता है. exactly. Yeah, तो Exactly. वही है. This is what happens when people don't rely on a research and they hear and say and they follow their own conviction. Let's say it is a borrowed conviction. It is not created conviction. And whenever you rely on a borrowed conviction, you are going to get trapped. Even Supreme Court has admitted in case of income tax, where while deciding the cases, that whenever the assessing officer makes any assessment on a borrowed conviction, the assessment fails. This is, you have to have your own conviction. You have to give your own reasoning for making any bad assessment. So similarly, in the case of investment also, so long as you are very firm, you go on your own rationale, you work out on the basis of your forecast, and then you decide if buying any stock, you will not go wrong. मार्केट का काम है तेजी मंदी कराना, वोलेटिलिटी नहीं करेंगे तो ऑपरेटर के घर में पैसा नहीं आएगा. Now, Jane, the US fund, which was barred by SEBI, and SEBI levied a penalty of 4,800 crores, on their website officially said that in 1 year they have earned 85,000 crores by operating options market in India. And who are these option traders? We are idiots. We Indians, we buy options, we trade in calls and puts and give money to them. Now, one Jain can earn 85,000. There are hundreds of Jains. You can imagine. I think now if you
sum up all these genes together 100 or 200 or 300 genes, and I mean FIS genes. Gen is one of the name. Yeah. They are more richer than our 543 MPs. Even if you put up one MP's tag of 1,000 crore, these FIs Excuse me. must be earning more than this. These FIs must be earning more than all MPs put together. So, I mean, this is just a hypothetical example, but fact is very clear. Market is in a good state. It is going to run up, and no doubt, the current frustration is created 9 days negative, 4 days positive, 1 days negative, again 3 days positive. This will keep on happening, but the breakout will happen on some trigger, and that trigger is expected in any time, any day, and market will move. Now, here are, I would discuss sectors first and then other issues. Chemicals is my top priority. Metal is my priority. I would give high weight in packaging. See, we did 7.8% GDP in Q1, which nobody expected. Now, how did this 7.8% GDP came? Unless economy grows, this kind of GDP is not possible. Now, if we are going to grow at 7% GDP for next 3, 4, 5 years, then this is just not possible without the help of packaging. And packaging is the most under discounted sector. Nobody is bullish because nobody understands packaging. Nobody wants to give a packaging valuation. 20 years back, we used to think about banks in the similar way. We used to trade a bank at 3p, 4p. Nobody used to give, says, no, will not bank buy. They are useless. Few years back, 3 years back, power companies like REC, PFC, they were trading at 3, 4 Ps and nobody was ready to buy. They have already become 10 beggars. So similarly, packaging is a sector where I think one has to bet very big and they will change the apple cart completely. That will be a sector to be watched for. And there are very few companies in packaging. So one, this sector, I like it. Then, of course, cement, then PSU, PSC, PSBs, then artificial intelligence, semiconductors, and apart from metals, one sector I again like packaging is engineering, because without engineering, the India's growth is not connected. Now, if you look at any engineering companies of last 4, 5 quarters, there is a growth. The numbers have increased very much. The reason again because they are directly connected with the economy. So economy is growing, business is growing, the engineering company is delivering, therefore their profits are growing. So that sector, lot of like BHEL, another example in engineering, what BHEL has not delivered so far, but the day they have an order book of 2 lakh crores and the average margin they had anticipated in this 2 lakh crore is 11%. Now, out of this 2 lakh crores new order, not a single order has been executed so far. So, in my opinion, I put it the other way around. On a 2 lakh crores, 11%, and almost 22,000 crores profit is hidden in BHEL. Therefore, the stock is struggling. It's an opportunity for her. Sooner than later, it will double, it will triple, and this is going to happen like what has happened with BEML or BEL. They were struggling like this. Same thing was Nalco. It was struggling. Now Nalco has become a very strong baby. And it will double from here also. So Acha. such stocks we'll have to identify. We have to find it out and invest there. You can Now, give us, since you have given us the sectors, you can also suggest us 1 to 2 companies for each sector. large cap mein to you can find out. Anybody can find out this. Small caps, I am afraid I can't speak on micro caps or small caps because I come under SEBI surveillance. So I Right. will not speak on micro caps and small caps. Large caps, Okay. anybody can find out any company. So not a big science, rocket science. Now coming to market, short term, long term, so we have already discussed. At any time it should come to 30,000. In short term, this congestion zone will continue for a while. But for a while, I don't know how can I define it. It will be 15 days. Maybe Diwali can provide us a trigger.
or maybe another 3 months, or maybe Trump come and provide the trigger. Till that time, the congestion zone will come. Why congestion zone? Because FIIs and big investors, they control the market. Our market is really not as grown as US markets. Now, Jane can come here and manipulate the market and make 85,000 crores. You can understand how much control they have it. So our market is, there is no free discovery in our market. Though as per regulations, there has to be a free discovery. But now you have hundreds of groups, Z group, B group, trade to trade group, then ASM, GSM. How can you have a free discovery of pricing? And when you don't have a free discovery, it's very difficult to comment on an overall market perception unless those who control the market, they break it loose, and they will break it loose. I gave an example of September 2021, 15,700. Everybody on charts, this is the market is struggling, market will collapse, market will collapse. One fine day, market run away. And we saw from 15,500 to 26,000, 10,000 point Nifty's rally, which was never imagined by anyone. Never imagined. So similar thing will happen even this time. So once we go out of congestion zone for whatever reason, then market will blast and will zoom 30,000. And my aim target is 47,000 by 2029, and it will come. It has to come. It will come because I am not doing any rocket science. I am doing 10-11% earning estimates. I'm adding with 24,500 base. I'm doing a CAGR calculation for 2029. It comes to 47,000. So if the growth exceeds that, because a lot of people in the North Block are claiming that we might do 8%, 9% GDP also within next 2-3 years. If that happens, then instead of 47,000, we might see 60,000. Nobody said. But logically, it looks like 47 is a fair estimate. And from 24,000 to 47,000, if you know in next 4 years that Nifty is going to go up 100%, you have your bets. You can make your money. Same thing I had advised in 2020 also, and people have made 100 times money. So same again possible that you take a little longer bet, you will make money. Because India growth story is not going to stop. India is going to become a superpower. There are some international agencies who have commented on India, like PwC has said that by 2038, India will be $38 trillion economy. Now, this is not a small thing. We are today at $4 trillion in 10 years' time or 12, 13 years' time. They're claiming that we will be 10x size in GDP. So if that is going to happen, you can visualize 10x in 10 years how much money we are going to make it. Provided you have conviction, you stick to your ideas, you stick to your stock for, like, I remember Motilal Oswal and Ramdev Agarwal, they made their fortunes in Hero and Bharti. Why? Because they stayed there for 20 years, 20, 30 years in that stock. Nimish, Vallabh Bhansali, Nimish Shah, they made their fortunes in Infosys. Why? Because they stayed there for 20, 30 years. So if you want to make your fortunes, then you identify your stock and stay long for that much period. Then only you will get that benefit out of it. Now, I think we spoke about market, we spoke about industry. Uh, Before we discuss about the reforms and its impact, let's discuss on gold and silver also. First, gold, my target, I'm bullish from 2008. And when it was 8,000 rupees in India, Tola, I was recommending gold. Even my wife, I had asked buy gold that time, and she had bought something small quantity. And she still always says thanks because she said nobody else in the world would have predicted this kind of movement. In all my columns, I have been writing, even at 2600, I was writing 4444 is my target. Now, today we are close to 4,000. But since the run up was very, very sharp, you can expect a 10% correction, not beyond that. So gold might correct to 1,10,000 or 1,7,8,000, but it will again bounce back. The correction maybe for 2-3 months, and then it will start moving up. Finally, it will end at 4,444, or in next 5 years, it's 6,666. I am looking at 2,05,000 also
पर ओ, तोला गोल्ड इन नेक्स्ट 5 7 10 years। ओके। बिकॉज जितना वर्ल्ड में डिसरप्शन ज्यादा होता रहेगा ना, उतना गोल्ड का डिमांड बढ़ता रहेगा। अभी ये सडन गोल्ड में क्यों स्पाइक आया? इज नॉट दैट बिकॉज ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स आर बाइंग गोल्ड, नो वे। चाइना इज बाइंग दिवाली, कंटिन्यूअसली। not only China, India also bought it. India, China, and Japan. They have been selling US bonds because of the Trump's policy, and they are converting from US bonds to gold. China still have 1.32 trillion dollars US bond. Japan has 0.97 trillion dollar Japanese bonds. So around $2 trillion if bond goes for selling, then they will have to buy only gold because they can't trust any other currency. So $2 trillion buying in gold can make gold double. So those my advice will be simple. Those who are holding gold, don't look up for short-term corrections. Buy in dips for long term. And those who have gold, they should convert into their jewelry. Surrender the gold, buy new jewelry and enjoy the life. Enjoy the gold. Same thing is about silver. In fact, I wrote in my column and suggesting finance minister they should come out with a scheme like LTCG in a flat. We buy one flat by selling another flat. There is exemption under Section 54. So some scheme should be brought in the finance bill where old gold should be allowed to be sold, and if we convert old gold into a new jewelry, then section सिमिलर सेक्शन शुड बी देयर कि दो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा आपको। अब जो इससे क्या होगा, अपने पास जो 25,000 टन वो सोना पड़ा है वो यूज में आ जाएगा और इंडियन इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। गोल्ड इंपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। उतना भी गोल्ड अगर बाहर आ जाता है तो गोल्ड को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक इंडिया हैज टू सुझाव मच है। ऑफ गोल्ड। इट हैज टू मच ऑफ ट्वेंटी फाइव गोल्ड। थाउजेंड टन मोर ट्वेंटी देन फाइव दैट, थाउजेंड ये तो टन सिर्फ एक फिगर दिया गया है। हमारे मंदिरों के तो पास इतना गोल्ड पड़ा है, सिल्वर पड़ा है, जो हम सोच ही नहीं how सकते। that can be? Government bonds, they have come with gold bond, did not succeed. The only way to succeed the success, it seems that you should allow like 54, section 54। आप जूना ज्वेलरी बेचो, उससे नया ज्वेलरी ले लो, 12 महीने में कभी भी ले। आप 12 महीने के अंदर ले रहे हो तो आपको टैक्स नहीं भरना। अभी यहाँ तो टैक्स गवर्नमेंट नहीं भर रहा है, लेकिन जो ज्वेलर लेता है, जूना ज्वेलरी खरीदता है, उसके भी गवर्नमेंट को टैक्स देगा। और जहाँ नया ज्वेलरी लेगा उस पे भी गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलने वाला ही है। इंडिविजुअल को राइट। तो जब तक आप लॉलीपॉप लॉलीपॉप नहीं दिखाओगे ना, तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो एक लॉलीपॉप वेरी दे गुड। सकते हैं इसमें। और दूसरा एक सजेशन ऐसा है कि एटीएचएससी सेक्शन को वापस लाना चाहिए। देखिए हमारी प्रॉब्लम हो रही है एक्सपोर्ट की, बड़ी प्रॉब्लम है। आज ये जापान ने हमने अमेरिका ने हमारे रास्ते बंद कर दिए एक्सपोर्ट के। हमने 40 कंट्रीज को अप्रोच किया है। रशिया ने हमको अच्छा हैंड दिया है कि भैया आप आइए रशिया में एक्सपोर्ट करिए। बाकी कंट्रीज भी बोल रही कि आइए आप एक्सपोर्ट करिए। लेकिन 2005 तक है ना, इंडिया में एक सेक्शन था, सेक्शन एटीएचएससी। अंडर ये सेक्शन में ना आपको 50 तक का एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट में से जो प्रॉफिट होगा उसका 50 तक का प्रॉफिट आपको एग्जाम किया जाता था। ठीक है, 50 तक का प्रॉफिट पे ही आपको टैक्स भरना है। उससे क्या होता था कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। तो ये तो गवर्नमेंट ने तब अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार के ली। हाँ, लेकिन ये उसकी वजह थी। क्या हो रहा था वो टाइम, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए बोगस बिलिंग काफी हो रही थी। लोग क्या कर रहे थे कि बोगस ज्वेलरी के बिल्स फाड़ दिए। आप बिल फाड़ते रहो और पैसा इनवर्ड लाते रहो और आप उसमें टैक्स मत भरो, तो आपका पैसा व्हाइट हो रहा है। और अब गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म है। अब गवर्नमेंट तो कोई भी इलीगल चीज को पकड़ लेती है। एआई के थ्रू भी पकड़ लेती है, जीएसटी के भी थ्रू पकड़ लेती है। तो अभी कोई स्कोप ऐसा है नहीं जिसे कोई आदमी फर्जी का बिल कर देगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा। अभी इसे लगता है कि एटीएचएससी लाना चाहिए। और अगर कोई कर भी लेता है कोई, तो वो गवर्नमेंट को तो टैक्स दे के ही जा रहेगा। तो राइट। एटीएचएससी लाने से क्या होगा, तो सडनली हमारा एक्सपोर्ट जूम हो जाएगा। जो हमारा टारगेट है एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन ले जाने का, $1 ट्रिलियन पार करना, वो अचीव इजीली हो जाएगा। और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड एकदम फेवरेबल हो जाने से रुपया सुधरना चालू हो जाएगा।
तो हमारा फ्री करेंसी, फ्री कन्वर्टेबल करेंसी करने का जो सपना है, जो आगे 2-5 साल में हो सकता है, वो पॉसिबल है। जब तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब है या निगेटिव चल रहा है, तब तक हम कभी ये सोच भी नहीं सकते। तो एक सजेशन है, अगर राइट। मान लिया, मैं तो मेरे नोट में लिखा भी है, कभी अगर हो गया हम्म। तो अपने लिए अच्छा है। सर ये कमिंग 3 मंथ्स आप कैसे देख रहे हैं? शॉर्ट कमिंग टर्म 3 मंथ्स पूछ में मैंने रही वही हूँ। बताया। शॉर्ट शॉर्ट टर्म शॉर्ट इसके टर्म लिए एक पूछ रही कंजेशन, हूँ। यस, सॉरी, टेल मी। कंजेशन जोन कब ब्रेक कंजेशन जोन कब ब्रेक होने वाला है, नो बडी नोज। हाँ, अगर दैट्स ट्रू। 25,900, 25,900 इसी सेटलमेंट में कूदा देता है निफ्टी, तो एफआई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि उनको 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट काटने के सिवा। इन दैट केस ये निफ्टी इमीडिएटली 28,000 हो जाए, इमीडिएटली, कटिंग कटिंग में ही हो जाए। तो ये कंजेशन जोन कौन ब्रेक कर सकता है, कभी ब्रेक होगा, ये तो नोबडी कैन जज। या ऑफ कोर्स। नहीं तो फिर मैं भी अपना घर बार बेच के पूरा निफ्टी पे ही लगा दूं। अच्छा सर, अभी हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हाउ यू फील अबाउट दैट? रियल इस्टेट में देखिए, अभी तक तो प्राइस अपने पहले ना 2000 में आई है। 2000 में जब कोविड हुआ था, सबको ऐसा लग रहा था कि रियल एस्टेट खत्म हो जाएगा, रियल एस्टेट प्राइसेस एकदम क्रैश हो जाएगी। थोड़ा बहुत गिरा भी, लेकिन वो स्ट्रे इंस्टेंसेस में हुआ, बट बाय एंड लार्ज द इंडस्ट्री हेल्ड द प्राइस। दे आर वेरी, रियल एस्टेट इज अ वेरी पावरफुल लॉबी। वो लोग इन्वेंट्री होल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्राइस क्रैश नहीं करेंगे। ठीक है। हम्म। तो ये टाइम भी वही होने वाला है, इन्वेंट्री ज्यादा है, उसके बावजूद भी प्राइस क्रैश नहीं होने वाला, प्राइस अपवर्ड ही जाएगा। अभी ओके। एक सोचिए, ट्रम्प का जो इम्पैक्ट हुआ है, कि ट्रम्प ने जो अमेरिकन को बोल रहे हैं कि भाई इंडिया वाले अमेरिका में नहीं आएंगे, वहां एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि अमेरिकन कंपनी इंडिया में आ जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड ओवर की बाकी कंपनियां बोलती है कि हमको सर्विस तो इंडिया में ही लेना है, क्योंकि आईटी इंडिया ही दे पाएगा, हेल्थ केयर जी। इंडिया ही दे पाएगा। ठीक है, और जो गुड्स इंडिया दे रही है बाकी सब सेगमेंट में, वो भी इंडिया ही दे पाएगा। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, अमेरिका में आने के बाद टैरिफ लगाएगा ना, तो मैं तो इंडिया में जाके लूंगा, तो कहाँ टैरिफ लगेगा, मेरा भाई प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया में लगा, जैसे एप्पल ने किया है। अभी एप्पल का मोबाइल इंडिया में बन रहा है, उसको तो टैरिफ नहीं देना पड़ रहा है। जी। उसने उल्टा प्रोडक्शन यहाँ बढ़ा दिया, वहां कम कर दिया, यहाँ बढ़ा दिया। तो बाकी सब कंपनियां भी शायद इंडिया में आएगी। अभी ये जब कंपनियां आएगी, सबसे बड़ी तो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट अगर इंडिया में आके अपने 100 स्टोर खोलती है, तो आपको 100 करोड़ स्क्वायर फीट की जगह लगेगी, कहाँ से आएगा सप्लाई? यू हैव टू वेट फॉर दैट डे, द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल विल कम हियर। तो अभी वो लोग तो देखिए, आप और मैं 1,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रह लेते हैं, ये गुड़िया जब आता है ना, तो उसको 5,000 स्क्वायर फीट के नीचे का फ्लैट चलता नहीं है। तो 5x डिमांड तो सब गोरियों को लेके ही आएंगे, तो 5x का डिमांड तो ऐसे ही क्रिएट होने वाला है आपका। बट तो इट ये may नॉट रेसिडेंशियल हैपन अब वेरी सून। इट might हैपन मे बी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो ये 5 साल का कंसोलिडेट व्यू का लेना सब है, कुछ 5 हो साल रहा है। 5 साल का व्यू लेना है रियल एस्टेट में, 5 साल का व्यू लेना है। कुछ नहीं होना है, ना प्राइस भागने वाला है, ना सप्लाई कम होने वाला है, ना प्राइस घटने वाला है। ये डिमांड बेस है। हर घर में से जिससे बाप बेटे का झगड़ा हुआ, या दोनों अलग डिसाइड किया, तो उसको मार्केट प्राइस से अलग फ्लैट लेके दे देना, वही डिमांड है अभी। राइट। अभी जो डिमांड है, हर हर एक फैमिली में डिवीजन होते जा रहा है। अभी ये सब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर आ गया। तो अभी जैसे आज समझो मेरा सन है, मेरे साथ है, उसका शादी हो जाएगा, अब कल वो बोलेगा कि डैड मेरे को अलग होना है, तो मेरे को एक जो भी प्राइस है वो लेके देना ही पड़ेगा एक फ्लैट उसको, ऑप्शन नहीं है। तो ये जो नया डिमांड आ रहा है, वो उसी उसी के कारण है, और वो रहते रहा। दूसरा जो है ना, अभी लोगों को हाई टावर में क्रेज है। अभी कोई बिल्डिंग बन रही है तारदेव में, उसमें प्राइस है 85,000 रुपीज स्क्वायर फीट। लोग बोलते हैं कि मेरे को यहाँ 50,000 वाला नहीं चाहिए, मैं 85 में ही जाके रहूंगा, क्योंकि उसमें सब एमिनिटीज है, रेस्टोरेंट भी है, क्लब भी है, मूवी भी है, स्विमिंग पूल भी है, जॉगिंग भी है। बोलते जितना जो फैसिलिटी दे रहा है ना, वो फैसिलिटी के हिसाब से हम लोग वहां जाएंगे। वो 87,000 मांगता हो तो दे देंगे। तो डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आपको मंदी, कोई माल में जाते हो तो मंदी का असर दिखता है क्या इंडिया में? पेमेंट के लिए क्यू में 20 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। ये इंडिया की हालत है। कोई रेस्टोरेंट में जाओ तो फोन पे बोलता है कि साहब पहला पैसा भरोगे तो टेबल बुक करूंगा, और नहीं आया तो पैसा गया तुम्हारा। और ऑन द स्पॉट जाओगे तो बोलते जगह नहीं है, फुल है। विदाउट रिजर्वेशन तो आप रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। ये हालत है इंडिया की। तो यहाँ रियल एस्टेट का घटने का कोई स्कोप ही नहीं है।
किशोर जी, अभी हमें रहा पार्ट टू विशाल करना बात करके। होगा। हमें पार्ट टू करना होगा इसके लिए, और हम कंटिन्यू करेंगे वापस। थैंक यू सो मच आपकी व्यूज शेयर करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी जी जी।